Question 31. Area of regular octagon inscribed in a circle of radius 1 unit is. So let's draw one circle and inscribe regular octagon inside. So this is my circle and this is my octagon. So let's assume this is regular octagon. So let's mark them A, B, C, D, E, F, G, H. So this is my center. Let me join the edges with my center. Now we know that ये जो एक triangle है, let's say the center is at O. So let's consider one triangle AOB. So since it is a regular octagon, so जो angle ये बनाएगा that will be 45 degree. And this is R and this is R. Now अब यहाँ पे पूछा है कि area of regular octagon क्या होगा. So अगर मैं area of triangle AOB निकाल लूं, so this will be equal to area of triangle BOC, which is again equal to area of triangle COD and so on. तो जितने भी ट्रायंगल्स यहाँ बने हैं सबके एरिया सेम होंगे क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है एंड सेंटर से वी आर कनेक्टिंग ऑल द एजेस. सो इसके सबके एरिया सेम होंगे. तो एरिया ऑफ ऑक्टागन कैन बी एरिया ऑफ ऑक्टागन is equal to 8 times of area of triangle AOB. So let's find out the area of triangle AOB. So area of triangle AOB is equal to half multiplied by A multiplied by B multiplied by sin theta. यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री. और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है. इफ दिस ट्रायंगल इज ए बी और ये थीटा हो. अगर इस टाइप का कोई ट्रायंगल है और ये थीटा है सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. सो यहाँ पे sin थीटा इज sin 45 डिग्री which is 1 by root 2. And also we know that A is equal to B which is equal to 1. So area of triangle AOB बन गया half of multiplied by 1 multiplied by 1 multiplied by 1 by root 2 which is equal to 1 by 2 root 2. So area of octagon क्या बन जाएगा 8 multiplied by 1 by 2 root 2 which is 2 root 2. So answer will be option A 2 root 2.